genomic functions such as DNA replication, transcription, and RNA splicing are compartmentalized with, within discrete site along with the host of nuclear bodies such as PML, Kajal, and histone loci, where our understanding of the biogenesis and assembly of various nuclear bodies are still in their infancy. Insight has been gained from physiochemical consideration. For example, it has been proposed that the nuclear bodies from when proteins bind and cross-link with the chromatin as a polymer segments, thereby collapsing the chromatin into globule-like configurations. Another purposed mechanism is that proteins binding to the chromatin induce liquid phase separation whereby liquid like nuclear bodies form around the chromatin globules. आगे भी पढ़ूंगा नहीं स्टॉप कर दीजिए मैम रिकॉर्डिंग करने इधर इंटरनेट का इशू आ रहा है वो कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट हो जाता है असल में मेरी भी आवाज़ पे डिस्टॉर्ट मुझे खुद फील हो रही है आई डोंट नो क्या है रिकॉर्डिंग का मैम इधर भी बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है कभी मैं फोन पे कनेक्ट कर रही हूँ कभी लैपटॉप पे कर रही हूँ आवाज़ नहीं आ रही सही से अच्छा नहीं है मैम यहाँ पे भी है इसीलिए ओके अच्छा इसके अंदर आप अगर देखते हैं ना प्रीवियसली जो हमने देखा था कॉन्सेप्ट क्या था क्रोमोसोम टेरिटरीज का और अब ये है कि जो इंटरेक्शन है क्रोमोसोम टेरिटरीज का विद इन न्यूक्लियस जो आप होता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमने पहले ही पढ़ा था कि सिर्फ डीएनए या जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो नहीं हैं बल्कि बहुत सारी और प्रोटीन्स हैं और बहुत सारे आप कह सकते हैं कि सब कंपार्टमेंट्स हैं ठीक है जो कि रोल प्ले कर रहे हैं इंटरेक्शन के बीच में बाकी सारी जो आपके पास जो प्रोसेस चल रहे हैं उसकी इंटरेक्शन में हेल्प कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट ये बता रहे हैं पेपर में हमें कि वी ऑब्जर्व अ स्ट्राइकिंग डिग्री ऑफ फंक्शनल ऑर्डर राइट wherein specific genomic functions such as DNA replication, transcription and RNA splicing are compartmentalized within discrete sites along with the host of nuclear bodies such as PML, Kajal and histone loci. If we just look at figure 1b, in previous class we discussed figure 1a. So just look at the figure 1b. I hope you all can see this figure. So here you can see the discrete small loci or sites within the nucleus, okay? And the red ovals are showing actually as replication sites and green ovals are showing us the transcription and RNA transcripts at splicing factor sites are also shown here. The pink colored structures, large structures, right? We can say that these are spliceosomes. The process of splicing, removal of introns from exons is taking place at discrete sites. Okay? Then you can see the chromosome territories. The regions, different regions within the nucleus, they are defined as chromosome territories. And then you can see the nuclear matrix. Nuclear matrix is again a type of specific proteins which are making the nucleoskeleton, right? And then nuclear lamina. You can see they have pointed it on the figure as nuclear lamina. Again, this is making the nuclear matrix and the nuclear skeletal features. Then you can see the nuclear envelope, outermost boundary of nucleus, and then you can see the nuclear pore. Okay, so the whole, all of these subcompartments, they are interacting intricately with each other. Okay. So while our understanding of the biogenesis and assembly of various nuclear bodies are still in their infancy, still we don't know much about these sub-compartments within the nucleus, but much of the information has been, gathered from physiochemical consideration. For example, it has been proposed that nuclear bodies
form when proteins bind and cross-link the chromatin as polymer segments, thereby collapsing the chromatin into globule-like configurations. So I told you earlier that whenever some process is taking place on the chromatin, its shape changes actually. Okay, so here whenever some protein binds and cross-link the chromatin, then we can see that we can see it as a globule-like configuration. And another proposed mechanism is that proteins binding to the chromatin induce liquid-liquid phase separations, whereby liquid-like nuclear bodies form around the chromatin globules. So it means that within the nucleus, in the subcompartments, wherever the transcription process is taking place or even replication is taking place, some sort of change in chromatin structure is observed, right? Then they just have described that what are the functional domains within the cell nucleus which are present as a separate entities, or alternatively they are linked to an interactive network, as studies into a nuclear matrix suggest. So some people have studied and they have proposed some models of chromatin interactions with each other. Okay, they have given their references as well. But the nuclear matrix was first identified by treating cells with high salt and nucleases. So how they actually got to know that nuclear matrix existed when they treated the cells with high salt and nucleases. So under these conditions, the nucleus retains its overall architectural features, such as the nuclear lamina, nucleoli, and fibrogranular matrix network. Detailed electron microscopic studies revealed a close resemblance of this fibrogranular matrix network to non-chromatin structures. G. Hello, G. मैम रिकॉर्डिंग ठीक रहेगी, आप रिकॉर्डिंग रहेगा, वॉइस क्लियर नहीं। मैम मैं कह रहा था कि रिकॉर्डिंग ठीक रहेगी, वॉइस क्लियर नहीं है। तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई? So when they treated the nuclei with salts and nucleases, they found that it can retain its overall architecture. And when detailed electron microscopic studies revealed that a close resemblance of this fibrogranular matrix network to non-chromatin structures visible under certain staining conditions in the interchromatinic regions of intact cells. So the retention of functionally related properties associated with isolated nuclear matrix, for example, DNA replication, repair, transcription, splicing, steroid hormone receptor, viral associations, protein kinases, oncogenes, tumor suppressors, and many other regulatory factors, is consistent with the nuclear matrix as a structural framework of nuclear function. So it means that the interior architecture of nuclear or nuclear matrix is a kind of structural framework for nuclear function. So the whole matrix provides a very strong support so that the molecular processes of transcription and replication, they are taking place properly. Okay, so then again they have described, they are telling us that there exists a higher order nuclear architecture that is actually telling us that we can see the dynamics, the dynamic structure of chromatin at very at gene level and then at chromosomal territory level. Okay, and this is very important as they demonstrated that in studies of DNA replication in transcription sites that remain bound to the isolated nuclear matrix. So moreover, DNA replication and transcriptional activities are still present in these preparations and function on the matrix attached DNA fragment. So it means that both the process of DNA replication and the transcription, they are taking place at unique sites or at unique regions within the nucleus. And
So this again gives us a kind of concept of replication and transcription factories. These two processes are taking place as a factory process. So, but despite this progress, it is important to realize that isolated nuclear matrix systems are likely static and highly stabilized versions of a dynamic nuclear architecture in living cells. So, because whenever we perform some experiment on living cells, definitely we actually try to see the process in that particular phase or time. So we can only get a very specific architecture at that time. But in reality, whatever is taking place and whatever is going on inside the nucleus, it's very dynamic. And the chromatin structure actually, it keeps on changing according to the requirement and according to the molecular process that is going on the genome. So moreover, the precise relationships of the isolated matrices to in vivo nuclear architecture and function remain to be defined. So whenever we do experiments, we get results, then we try to actually extrapolate those results to the in vivo nuclear architecture, but still we get limited information. So in one previously stated view, the in vivo nuclear matrix is considered as the milieu in the nucleus where domains of chromatin and ribonucleoprotein complexes dynamically interact to form modules of higher order architecture and function. To further extend this model, interactions among individual modules may occur, resulting in many local network-like connections dispersed throughout the nucleus. So it means that within the chromosome, individual chromosome territories, we may find very small local network-like connections which are actually scattered throughout the nucleus. So isolation of conditions for the nuclear matrix may then result in one stable network termed the nuclear matrix. So if we are able to isolate many such versions of chromatin architecture through experiments, then we may be able to actually get the final picture of the chromatin organization. So in this view, continuous nuclear matrix structure is not present in the in vivo nucleus. Instead, higher order discontinuous architectural elements may provide the basis for nuclear matrix isolation. More research on many levels is needed to resolve the issues. Then the architectural role of nuclear matrix likely extends to the CT themselves. Okay, so we have to look into the individual CTs. So previous studies have indicated the association of telomeres, centromeres, chromatin loops, and the attachment sites for chromatin loops termed S/MARS, matrix or scaffold attachment site regions on the nuclear matrix. So some studies actually isolated these regions on the nuclear matrix. So S and Mars DNA binding elements have been identified in silico. So it means with on the DNA, we can find these regions where nuclear matrix proteins can attach. And recently analyzed a genomic scale, which would open additional doors to the understanding of these critical but enigmatic regions of the genome. So moreover, experiments on whole cells to isolate nuclear matrix demonstrated that despite the removal of up to 90% of chromosomal histones, the chromosomal DNA in the remaining nuclear matrix structures are still folded into territorial arrays resembling intact CT. So subsequent disruption and extraction of nuclear matrix protein led to a corresponding disruption of territorial organization. So what these lines are telling us that the nuclear matrix is playing very important role in the organization of chromatin within the nucleus. Okay, so if we remove the histone proteins, but still the rest of the DNA is able to arrange or organize in a very specific way within the nucleus. So several proteins associated with isolated nuclear matrix have been identified as potential factors involved at chromatin loop SMAR attachment sites or higher order CD. So there are some proteins, for example, topoisomerase 2, CTCF, cohesin, matrin 3. These are all proteins which are actually found attached at S and MAR sites of the genome. So there are so many proteins and nuclear lamins as well. So recent proteomic approaches have further confirmed the SMAR binding activities of SAFA, matrin 3, and nuclear lamins. So CTCF and cohesin have been identified as key players
in the arrangement of chromatin into higher order domains, termed topologically associated domains. Okay, so now you also have learned about TADs in the paper of bacterial genome organization, and here again you can see that in eukaryotic genome organization there are specific proteins which are actually helping in the arrangement of the genome in TADs, topologically associated domains, and CTCF is one of the important, and SAF and metrin are important proteins, and which mediate long-range intrachromosomal and interchromosomal interactions within the nucleus. So, just see that within the TADs, actually we can see long-range intrachromosomal and interchromosomal interactions. So what it indicates that on a linear scale, on a linear chromosome number 1, for example, we want to see that very distally located regions, how they are interacting. So the CTCF and SAF and matrin3, all these proteins are actually helping the distally located regions of chromosome number 1 to arrange into loops, and they can come close together. So in this way, we can see intrachromosomal and interchromosomal interactions, right? Interchromosomal means that between different chromosomes, and intra means that within the same chromosome. And then they have described that recently HNR-NPU has been demonstrated to be integral to maintaining genome organization at TADs and higher levels of chromatin. Then they have again described many other properties of matrin3 protein and other proteins as well. And they basically they try to unveil that a crucial role of RM2 motif of matrin3 for regulating interactions with other nuclear protein and maintaining its characteristic intranuclear localization. So basically what they are telling us in this paragraph is the structural features of matrin3 proteins, which are actually responsible to not only to interact with DNA, and also involved in DNA replication and repair or transcription and RNA splicing, but also interact with other proteins, okay? And also maintain its intranuclear localization. Again, they detailed visualization studies, including computer-assisted analysis, demonstrated that matrin3 forms a network-like structure in the nucleus, which permeates the interior of CT and is in close proximity to functional domains containing active sites of transcription, RNA polymerase II, RNA splicing, and other functionally related factors. So again, it's just indicating that this protein is very actively involved and has a role in different processes as well. So while the potential role of matrin3 as a major component of all overall scaffolding network in the cell nucleus remains to be resolved, it is interesting to note that deletion mutation in RM2 domain resulted in major alteration of the network-like organization. So that indicates that the particular motif of this protein was actually helping in organization of the genome. So again, based upon other experiment, it was proposed that SAF-A and matrin3 are major components of nuclear scaffolding structure that serve as dynamic assembly centers for the organization of functional neighborhoods of genomic function in the cell nucleus. The potential physiological roles that matrin3 plays in nuclear organization and function are further emphasized by recent findings, connecting mutations in the matrin3 gene to the diseases like ALS, distal myopathy, and left ventricular outflow tract obstruction, a common congenital heart defects. So again, it's indicating that the proper organization of genome is very important, and if we mutate the proteins, then that can result in the various diseases. Okay. So within the nuclear matrix, the nuclear lamina, the network of peripheral proteins surrounding the inner nuclear membrane, has also been posited as a major factor in the organization of the genome. So lamin proteins, again, are very important proteins, and they are providing a whole meshwork and support so that the genome can be organized properly. Okay, and again, mutations in the lamin genes also result in diseases.
So in the rest of this part, they have described all about the laminin proteins. I also have shared the presentation topics. I've sent the email to Ihtisham and he will be sharing with you. So one of the group will be presenting the laminin proteins and its role in genome organization. So I'm not going into detail about this laminin. Okay, and this and the rest of the part is actually quite easy. You can read it yourself. Okay. The next main heading is hierarchy of chromatin organization and function. The organization of chromatin and the impact of nuclear structure on the regulation of cell have fascinated biologists because the nucleus was first visualized by microscopy. The eukaryotic genome is hierarchically organized across a spectrum of levels. Okay, so we already have seen the figure 1 where we have seen the hierarchy. So at the lowest scale, chromatin is packed by histone proteins into repeating structures. We all know that they are called as nucleosomes, and they consist of 147 base pairs of DNA, and we all know its structure. So, and we also have learned about the 10 nanometer fiber and then 30 nanometer fiber. Okay. So the next level of organization involves the folding of chromatin into loops anchored to the nuclear matrix or chromosome scaffolds. So chromatin loops were first identified in human cells as DNA supercoiled domains with an average size of approximately 200 kilobase pairs. So electron microscopic analysis further revealed that DNA halos, which appear following relaxation of the supercoiled domains, consisted of tightly packed and highly convoluted DNA loops anchored to the chromosome scaffold and nuclear matrix, respectively. So then they actually performed different experiments and try to see that how these proteins are actually attached with the nuclear matrix. And in this way, post-replicated DNA accumulates progressively in the distal portions of the loops at a rate consistent with the bidirectional replication fork. So analysis of gene positioning along the DNA loops further indicated that inactive gene positioned in the distal regions of DNA loops are repositioned near the nuclear matrix, attached sites for the DNA loops in correlation with gene activity. So it means that whichever regions of genome are active transcriptionally, then they would be placed close to the matrix, okay, close to the peripheral regions. And this suggests that intriguing idea of a dynamic chromatin loop program corresponding to the overall transcription program of a cell. So consistent with these results, biochemical and genomic approaches have revealed that SMR attachment sites preferentially associate with actively transcribed genes. So that again indicates that nuclear scaffolding proteins are playing very important role in transcription and replication or other processes. So another, important feature that was observed by using high throughput techniques, for example, 3D microscopy or quantitative computer imaging analysis, just told us that increase our understanding of higher order chromosome domains beyond the chromatin loops. So appropriate pulse chase experiments reveal that replication is organized at discrete replication sites, okay? Or we can call them as replication foci within the nucleus, with each replication site containing an average of 1 megabase pair DNA. And based on the average lifetime of each RS or replication factory, this corresponded to 5 to 6 replicons or chromatin loops with an average size of 180 kb. So these results were consistent with earlier biochemical findings demonstrating the organization of DNA polymerases and primases into large mega complexes bound to the isolated nuclear matrix from regenerating rat liver. So is it clear till now? Yes, ma'am. अभी तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें. Excuse me, ma'am. जी बोलें.
मैम जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है मैम, ये सेल टू सेल वेरी करता होगा या ऑलमोस्ट हर सेल के लिए सेम होगा बॉडी के? नहीं, ये टिश्यू स्पेसिफिसिटी और अगर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं तो ये वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल स्किन में ही अगर देखते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल में ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी, आपके जो केराटिनोसाइट्स हैं उनमें चेंज होगी, आपके जो बाकी अगर आप बात कर लेते हैं टिश्यूज़ की जो बॉडी में है, फॉर एग्जांपल हार्ट मसल्स उनमें डिफरेंट होगी, हार्ट सेल्स में, लिवर सेल्स में इनकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी, ठीक है। सो देयर कम्स टिश्यू स्पेसिफिसिटी एज वेल। और क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल इसलिए है कि जब हम ये कह रहे हैं ना कि जो न्यूक्लियर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस या जो रेप्लिकेशन है उसके साथ उसका डायरेक्ट लिंक बनता है। तो जाहिर आपको पता है कि ये सारे सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, इन्होंने ख़ास किस्म की ही प्रोटीन्स बनानी है, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स की जब सिंथेसिस होगी, इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट सेल्स में जो खास प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो वो वाले जो जीन्स हैं दे शुड हैव अ वेरी स्पेसिफिक लोकेशन और पोजीशन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उनका जो स्ट्रक्चर है 3D वो चेंज होगा, ठीक है। और अगर आप ये कंपैरिजन करें लिवर सेल्स की बात करते हैं तो लिवर सेल के अंदर जो जीनोम का 3D स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, दैट वुड बी चेंज्ड, ठीक है। ठीक है मैम, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये स्पेसिफिकली फिर जनरल मतलब किन सेल्स के लिए होगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी? अभी तक तो हम जो पढ़ रहे हैं ना वो हमें जनरल बता रहे हैं ना कि हम इसकी हम देख रहे हैं हायरार्की देख रहे हैं कि लोअर लेवल पर हमारे पास इंटरेक्शन क्या है, लार्ज लेवल पे क्या है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स इन न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मेट्रिन 3 है, आपने CTC अब देखा या बाकी जो नाम लिखे हुए इन्होंने बहुत सारी प्रोटीन्स के। तो इन सारी प्रोटीन्स का काम ये है कि इन्होंने जो जीनोम की 3 डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें हेल्प करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प आउट करना है, ठीक है। और प्लस फिर हम अब ये पढ़ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन फैक्ट्री कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो फैक्ट्री कॉन्सेप्ट में यही होता है कि आपकी जो सारी चीज़ें जो चाहिए होती है ना, जो सबस्ट्रेट्स हैं, जो आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड अप करने होते हैं, वो आपकी क्लोज पोजीशन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर आप विद इन द जीनोम देखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंट जो है ना वो मतलब एक सिंगल जीन करके तो वो अपना प्रोसेस कर रहा है। वहाँ पे उन्होंने फिर इस क्रोमैटिन डोमेन्स बना दी हैं, जो एक्टिव डोमेन्स हैं वो फिर लूप आउट करके तो उस फैक्ट्री तक पहुंच जाती हैं, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, वापस जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वो अपनी डोमेन में आके सेट हो जाती हैं, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्दर है उसकी। ओके मैम, थैंक यू जी। Okay, so similar chromosome domains have also been visualized several generations after long-term labeling of DNA. So they have used different experimentation and different techniques. Okay, so these MBP series are therefore a fundamental unit for both the higher order assembly of chromatin and its replication at replication factories. So most recent studies of higher order CD using the high throughput chromosome conformation capture (Hi-C) approach have led to the identification of similarly sized domains termed TADs. So it's now generally accepted that TADs and the megabase pair series represent the same higher order CD identified by two different approaches. राइट अब इन्हें दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट या डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस यूज करके तो दे रीच्ड एट अ कंक्लूजन के जो टैड्स हैं और जो सीरीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हैं उनको हायर ऑर्डर जो है ना उनका वो है आइडेंटिटी रखते हैं वो, ठीक है। सो फाइंडिंग्स ऑफ डिस्क्रीट ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्रीज वेयर मल्टीपल जीन्स कैन बी ट्रांसक्राइब्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी may represent another functional aspect of the MBP series. So genes from different regions of individual series could loop out to form a cluster of active genes under common transcriptional regulation within the transcription factory. ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी explain किया exactly वही बात इसमें बता रहा हूँ. So understanding the arrangement of chromatin beyond the MBP series is a challenging area of research. In one direction, studies of arrangement of RS and transcription sites, replication sites and transcription sites in 3D led to the finding of discrete higher order zones of replication and transcription that appeared as separate network structures in the cell nucleus. So these higher ordered zones of replication and transcription are maintained following extraction of whole cells for nuclear matrix, further implicating a critical role of this overall network structure in the structural compartmentalization of these two fundamental genomic processes. So what they are telling us that both the replication sites and transcription sites, the researchers were able to actually isolate them, and then they try to see or to
observed through different experiments that they can retain their structure, right? The fundamental, the overall network structure was maintained for replication sites and transcription sites. ठीक है, उनका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था ना वो रिटेन करते हैं, क्योंकि वो रिटेन करेंगे तो ये प्रोसेस होएंगे, अगर वो रिटेन नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, ठीक है. Then they just have described different techniques, for example 3C, high C, and many other techniques, and then they have actually tried to explain the occurrence of TADs and series by all these um, you can say organizations. Then the high C experiments have also resolved the genome into 2 major compartments, right? A compartment and B compartment, representing euchromatic versus heterochromatic microenvironments respectively. So A is for euchromatic environment and B is for heterochromatic environment. Right, so we already have discussed that what is heterochromatin, what is euchromatin. So by using high throughput experiments, they also have actually analyzed it, and then they have divided the genome into A and B compartments. So while constitutive heterochromatin is typically composed of repetitive DNA and is involved in structures such as centromeres and telomeres, facultative heterochromatin is result of gene silencing via histone deacetylation. So we can observe that the regions of the genome within the heterochromatin, they are actually silenced, and they are having very important features of silencing, for example, histone deacetylation. So we already have covered it, that acetylation is actually helping the genome to open up and to start the replication or transcription. While if it's silenced, if the deacetylation is there, so it means that that region is silenced region. So there's a G. मैम ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है? यहाँ पे आप देखें, facultative heterochromatin is more dynamic and reversible structure that can decondense and become transcriptionally active. अब इसमें ये है कि एक वो रीजन है आपके हेटेरोक्रोमेटिन का जो कि आपके मौजूद है इसमें टीलोमेयर्स और सेंट्रोमियर्स में, ठीक है. जैसे हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव वो हेटेरोक्रोमेटिन वो है जो कि ट्रांसक्राइब नहीं होगा. आपको पता है ना, सेंट्रोमियर ट्रांसक्राइब नहीं हो सकते, टीलोमेयर ट्रांसक्राइब नहीं हो सकते, ठीक है. तो they have to be actually constitutively heterochromatin as a structure, ठीक है. लेकिन कुछ आपके फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिक रीजन्स होते हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसे जीन जिन्होंने रेगुलेट होना है, ठीक है, वो डेवलपमेंट में जब कोई खास स्टेज आएगी तो वो फिर एक्टिव होंगे ना, उससे पहले वो इनएक्टिव होंगे. सो दे कैन रिजाइड इन फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन. वहाँ पे वो हो सकता है कि वो उस टाइम पे रिजाइड कर रहे हैं, लेकिन जब उनका जो आप कह सकते हैं कि स्टेट चेंज हो जाएगी, दे हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड, तो क्या होगा कि वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है. वो पहले डीएसिटाइलेशन से स्टॉप हुए हुए थे, साइलेंस हुए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो कंडीशन आई और उनको उन जीन्स ने एक्सप्रेस होना था, तो फिर क्या होगा कि वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है. तो वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है. दे कैन बी डीकंडेंस्ड. मैम ऑन ऑफ, जैसे ऑन ऑफ जीन्स होते हैं, लाइक जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो उस वक्त वो एक्सप्रेस होंगे. जी बिल्कुल. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे सारा जो जीनोम है, जितने भी जीन्स कैरी कर रहा है, दे ऑल आर नॉट ट्रांसक्राइबिंग एट द सेम टाइम, ठीक है. कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं, हाउसकीपिंग जीन्स जिनको कहते हैं, ठीक है ना. एवरी सेल नीड्स एनर्जी, आपको एटीपी चाहिए, आपको रेस्पिरेशन करनी है, तो वो जीन्स जिन्होंने हर वक्त एक्सप्रेस होना है, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हाउसकीपिंग जीन्स. और जो कि रेगुलेट होते हैं किसी खास कंडीशन पे, तो वो आपके रेगुलेटरी जीन्स आ जाते हैं, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे हम ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन की बात कर रहे हैं कि ये वो रीजन्स हैं जो सेंट्रोमियर और टीलोमियर्स में हैं. आपको सबको पता है कि सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर्स आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है. ये इनका रेप्लिकेशन तो होती है, इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना है, बट दे आर नॉट ट्रांसक्राइबिंग क्योंकि ये जीन्स को एनकोड नहीं कर रहे, ठीक है ना. लेकिन ये है कि कुछ रीजन्स हैं ऐसे जो कि हेटेरोक्रोमेटिन के जिन्होंने ट्रांसक्राइब होना होता है, लेकिन सिर्फ वो रेगुलेट हो सकते हैं, तो वो जो है ना वो फिर चेंज हो सकते हैं. दे कैन बिकम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. ठीक हो गया. थैंक यू मैम. So in high C matrices, compartments can seen as blocks of interaction that are off diagonal and therefore represent coalescing TAD regions of heterochromatin or euchromatin. अब आप फिगर 2 पे अगर आ जाएं,
If you just look at the figure 2 and see that this figure is showing us the hierarchy of higher order chromatin organization based on high throughput chromatin conformation capture, high C, okay? So diagrams are shown of higher order chromatin organization in a hierarchy from whole CT to A, B compartments and to topologically associating domains, TADs or MBP chromatin domains, CDs, to specify enhancer promoter interactions. So you can see from A to D with the corresponding schematics of high C visualization representing the interchromosomal interactions and A and B compartments. ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर देखते हैं A, B, C and D तक अगर आप देखते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं कि A में आप अगर जूम आउट कर रहे हैं न्यूक्लियस को, यू कैन इजीली सी द क्रोमोसोम टेरिटरीज, ठीक है, डिफरेंट कलर से उन्होंने शो किया हुआ है, रेड है, ब्लू, ग्रीन, पिंक, सो ऑन। अब आप उसको जब थोड़ा जूम इन करते हैं तो विद इन दैट क्रोमोसोम टेरिटरी यू कैन सी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, तो अगेन ए कंपार्टमेंट आपका जो कंपार्टमेंट होगा वो शो कर रहा होगा ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन को, फॉर एग्जांपल जो हम यूक्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, और बी कंपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा टाइटली क्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाए तो आप टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन्स में फर्दर जूम इन कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे आपके पास जो डिफरेंट रीजन्स इंटरेक्शन कर रहे हैं आप उसमें, ठीक है। उसके बाद आप उसी के अंदर फर्दर देखते हैं जहाँ पे जीन्स एक्टिव हैं, तो डी के अंदर एनहांसर प्रोमोटर जो शो किया हुआ है वहाँ पे आप देख लें कि न्यूक्लियोसोम भी शो किया हुआ है, फिर CTCF प्रोटीन जो कि इसको मैट्रिक्स के साथ अटैच कराती है आपके न्यूक्लियोसोम को, ठीक है, या जो जीनोम को, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पे डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो शो किए हुए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अगर देखते हैं EFG और H जो है, जहाँ पे आप अगर उसी चीज़ को आप देखते हैं कि जब आप कंप्यूटर्स पे, जब आपका हाई सी डेटा जो है उसको आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे और आपने मॉडल्स बनाए होते हैं इंडिविजुअल पेयर की इंटरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो फिर आपको कैसे नज़र आते हैं, ठीक है। और आप सबसे नीचे देखें तो एक एरो शो हुआ ब्लैक कलर में जिस पे लिखा इंटरक्रोमोसोमल CT इंटरेक्शंस, फिर नेक्स्ट में है इंट्राक्रोमोसोमल कंपार्टमेंट्स, नेक्स्ट में टैड्स है, फिर एनहांसर प्रमोटर है, ठीक है। वही चीज़ जो ऊपर ABCD में शो हो रही है उसकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि आप लोअर लेवल की साइड पे जा रहे हैं, जो प्रमोटर, इंडिविजुअल प्रमोटर और जीन के इंटरेक्शन या एनहांसर के इंटरेक्शन जहाँ पे होते हैं, ठीक है। ओके, so these compartments are enriched in histone marks indicative of their chromatin state as expected. A compartments are generally more gene rich and have higher levels of expression than B, and this demarcation of chromatin states has become more complex because heterochromatin has been subdivided into 4 or 5 distinct area states that range from constitutive to facultative and are marked by different epigenetic modifications. Again, जब मैंने बात आपको पूरी बताई है पीछे, ये उसी ही को थोड़ा सा explain कर रहे हैं कि compartment A और compartment B both have different states of chromatin marks. For example, जैसे हम कह रहे हैं कि जो heterochromatin है उसके different रेंजेस आ जाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव भी है, फैकल्टेटिव भी है, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट सॉर्ट ऑफ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस दे आर हैविंग. So similarly, using a higher resolution high C technique, the A and B compartments can be subdivided into distinctive subcompartments. More recently, however, single cell high C approaches have determined that rather than distinct subcompartment, TADs exist within the spectrum of compartments that range from A to B. यानी A और B जो major compartments है उसके अंदर भी आपके पास पूरा एक spectrum मिल सकता है, variations मिल सकती हैं. अच्छा, उसके बाद इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो कहाँ, उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है. प्रेफरेंशियली इट्स लोकेटेड एट द न्यूक्लियर पेरिफेरी, ठीक है. As such, inactive TADs associated with B compartments are preferentially located at the nuclear periphery. तो इसी तरह अगर B compartment वाले भी जो हैं जो कि inactive हैं आपके पास जीन्स, तो वो भी पेरिफेरी के पास लोकेट करे होंगे. While active TADs in compartment A compartment are generally more interior. जो एक्टिव है वो इंटीरियर की साइड पर होंगे, ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर अगेन उन्होंने बताया कि जो 11 प्रोटीन्स हैं उनका रोल है इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो इम्पॉर्टेंट है और फिर उसमें प्रोजेरिया डिजीज जो है वो बाइंड हो सकती है अगर प्रॉब्लम हो तो. अच्छा, उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीटी जो है उसकी बताइए कि जो सीटी मैम, जी
बोलें। मैम ये थ्रू आउट द इंटरफेस जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होगा तो जितने भी पेरिफ्रीज है वहां पर हेटेरोक्रोमैट अच्छा जी हेटेरोक्रोमैटन रीजन होगा और यूक्रोमैटन जो है वो इनसाइड पे होगा। जी मेजॉरिटी केसेस में तो अभी तक ऐसा ही है, इंटरफेस ही हम जीनोम की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा ही है कि जो हेट्रो है वो पेरिफेरी की साइड पर है, जो यूक्रोमैटिन है वो इंटीरियर है। ठीक है जी मैम सही। अच्छा अब ये कि जो क्रोमोसोम टेरिटरीज हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में क्या अभी तक हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है और व्हाट दे आर टेलिंग अस अबाउट। एक मिनट। So, following the establishment of chromosome territory as a basis for the organization of the genome in the cell nucleus, investigators focused on understanding how the individual territories were arranged within the 3D architecture of the cell nucleus. So, at a first step, the relative radial arrangement of chromosomes was examined with respect to the nuclear periphery and center. अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्म यूज करें रिलेटिव रेडियल अरेंजमेंट ना, अगर आप न्यूक्लियस को देखते हैं तो एक सर्कुलर एंटिटी है वो, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर काइंड ऑफ। तो इसमें आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब आपने किसी भी क्रोमोसोम की या उसकी टेरिटरी की लोकेशन देखनी है तो आपने कोई रेफरेंस पॉइंट्स देखने होते हैं। ठीक है, आप इन जनरल भी जब किसी जगह का मैप देखते हैं, कहीं आपने जाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप कुछ वो रख लेते हैं ना, मार्क्स रख लेते हैं, कुछ आपके पास वो होता है कि अच्छा जब फलां जगह पे ये चीज़ मौजूद है, फलां ये है, तो रेफरेंस पॉइंट्स आपके पास होते हैं। तो सिमिलरली जब हम देखना चाहते हैं कि विद इन द न्यूक्लियस जो डिफरेंट क्रोमोसोम की टेरिटरीज हैं वो कहाँ लोकेट कर रही हैं और वो कैसे इंटरेक्शन कर रही हैं, तो उसमें ये कहते हैं फर्स्ट स्टेप होता है कि जो हम उसकी वो रेडियल अरेंजमेंट हम चेक करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम पेरिफेरी एंड वी मूव टुवर्ड्स इंटीरियर। ठीक है, तो वो एक रेडियल अरेंजमेंट उसमें आती है। तो न्यूक्लियर पेरिफेरी और सेंटर में। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वेश्चन वाज वेदर सीटी आर रैंडमली अरेंज्ड or whether there was a level of non-randomness in their positions within the cell nucleus. So these studies clearly established a high level of order and the radial positioning of individual CT in the cell nucleus. So there were many studies which actually demonstrated that the chromosome territories, they occupy a very specific arrangement. ठीक है, वो location within the nucleus. ठीक है, इनकी में randomness नहीं है, they have non-random position. ठीक है, so because the transcriptionally inactive heterochromatin in the nucleus is preferentially localized along the nuclear periphery, the relationship of peripheral position to the gene density of individual chromosomes was analyzed in detail. ठीक है, तो peripheral position और फिर जो gene density है उसका relationship क्या है exist करता। So in an initial study, the inactive CT had a more peripheral location within the nucleus than its active counterpart. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से इनको ये पता चला कि जो X को ही अगर फोकस करते हैं, इनएक्टिव X जो क्रोमोसोम टेरिटरी है वो ज़्यादा उसकी जो पेरिफेरल लोकलाइजेशन है, इसका मतलब है कि इनएक्टिव है तो दैट वुड बी एक्चुअली विद क्लोज टू द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, the relationship between radial positioning and gene activity can also be demonstrated for the somatic CT because gene density generally correlates with gene activity. ठीक है, जीन डेंसिटी जो है वो को रिलेट कर रही है जीन एक्टिविटी के साथ। द सीटी दैट आर जीन पुअर मे बी पोजिशन्ड मोर पेरिफेरल than those that are gene rich because they are less transcriptionally active. For this reason, several studies have concluded that gene density is the major contributing factor to the radial positioning of CT. For example, the gene poor CT18 is more peripheral than gene rich CT19, and this paradigm may be extended to individual genes or gene complexes within the chromosomes. So individual genes that are expressed are typically found more interior than those that are not. So interestingly, aberrant localization to the nuclear periphery by tethering regions to the nuclear lamina results in the inhibition of transcription. So moreover, the radial positioning of CT in the same cell type are conserved throughout primate evolution. So this is very important point. The last one, someone just asked me that कि हम एक सारे tissues या cells में एक जैसी होगी, तो ये है कि जो cell type है ना, जो chromosome territories की जो location है, that is depending upon the cell type. तो सेल टाइप चेंज हो जाएगी, यू शुड एक्सपेक्ट अ चेंज इन द क्रोमोसोम टेरिटरी। ठीक है,
So studies demonstrating a close correlation between gene density and radial positioning were performed predominantly in the relatively spherical nuclei of lymphocytes. So analysis of radial positioning is in flatter cells, for example, fibroblast, however, have shown a more complex situation where chromosome size becomes an important factor. So in these cases, the radial positioning generally correlates with chromosome size and not gene density. So again, अब ये depend करता है कि cell type की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर itself जो cell है उसकी अपनी shape क्या है और फिर उसके nucleus की shape क्या है, ठीक है. जैसे हम बात करें कि lymphocytes तो आपको पता है कि relatively खुद भी वो spherical cells हैं और फिर जो उनके nuclei है वो spherical हैं. लेकिन जैसे फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं ये तो स्फेरिकल नहीं होते, थोड़ा से फ्लैट हैं कंपैरेटिवली, तो वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. एंड डेफिनेटली वी कैन नॉट कंपेयर द CTs of fibroblast with that of the CTs of lymphocytes. So it was recently reported that radial positioning of a subset of 7 chromosomes were not altered during cell cycle, but had limited alteration between fibroblast and epithelial cell types. अभी कि again cell types फर्क होगी तो वो change होगा. In addition, 5 of 9 CT examined showed significant differences in radial positioning between normal breast epithelial cells and corresponding malignant cell lines. Even more strikingly, it was reported that radial positioning of 7 CTs in undifferentiated human keratinocytes strongly correlated with gene density, while the positioning in the corresponding CT from late differentiating keratinocytes were highly altered with no relationship to gene density or chromosome size. So all these findings are consistent with the probabilistic radial positioning code proposed by Creamer and Associates and support the view that probabilistic positioning code is cell type specific and can undergo alterations during both malignant progression and cell differentiation, where massive changes in the genomic expression programs generally occur. So what all these experiments and all these observations are telling us actually, that because of the status of the genome, whether it's actively transcribing or it's inactive, the organization is directly linked with this phenomena, okay? And then again comes the differentiation state, and then come the disease condition, and then cell type specificity. All these are the factors which are affecting the organization of the territories or the chromosomes. So several factors other than gene density or chromosome size have been implicated in the radial arrangement of CT. So interactions with other nuclear compartments are proposed as one mechanism by which radial positioning is established. For example, the interaction with nucleoli is implicated in the radial positioning of the nucleolar NOR CT. So the nuclear lamina has also been demonstrated to be important for the radial organization of CT. Specifically, cells that express the aberrant truncated lamin A protein have an altered radial arrangement of CT. So it also indicates that within the nucleus, we know that nucleolus is another very important compartment where the RNA is transcribed, for example, ribosomal RNA and other types of RNA, and then it provides a kind of factory for the synthesis of ribosomes. So the nucleolar, you can say NOR CTs, they are also helping in the interaction, they are helping in organizing the rest of the genome, okay? And in addition to interaction with other nuclear compartments, several protein factors or protein modification may also have role in radial positioning of CT. So knocking down the actin family members, ARP6, a histone variant, myosin, or inhibiting histone deacetylation all lead to abnormal radial positioning of CT. And this indicates that these proteins have a very important role in their organization of the chromosome territories. Okay. So the next topic is interactions between CT. So within the CT, what is the situation, and then what is happening between different chromosome territories within the nucleus, okay? Excuse me, ma'am. जी मैम ये जो सीटी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं, इनका स्टिमुलाई क्या होता है, मतलब इनकी फॉर्मेशन में स्टिमुलस क्या होगा, और अगर फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंट स्टेज आती है, लाइक कैंसर स्टेज आती है, तो क्या उनके सीटी स्ट्रक्चर्स इफेक्ट होते हैं, मतलब वो इफेक्ट होते हैं, उससे कैंसर कॉज हो सकता है, या कैंसर की वजह से उनकी डोमेन्स का स्ट्रक्चर इफेक्ट हो सकता है, मतलब
क्या ये बहुत ये चीज? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्चुअली। असल में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हैं ना, इनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि जो क्रोमोसोम, देखिए एक चीज़ तो ये डन है कि जब कैंसर है तो उसमें जीनोम सीक्वेंसेस काफ़ी सारी जगहों पर म्यूटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब एक रीज़न ये हो सकती है कि जितनी भी ये प्रोटीन्स हैं हमने जो पढ़ी हैं, दे वेरी स्ट्रांगली दे इंटरेक्ट विद जीनोम, ठीक है, डिफरेंट जगहों पर। तो ये पॉइंट भी हो सकता है कि वहाँ पे म्यूटेशन आ गई, उसकी वजह से अब वो प्रोटीन इंटरेक्ट नहीं कर रही है, उसकी चेंज हो गई है स्ट्रक्चर। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि आपको पता है कि कैंसरस सेल के अंदर जो जीन एक्टिविटी है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, वो बहुत चेंज होता है अगर आप उसी के काउंटर पार्ट नॉर्मल सेल को देखें तो, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल है, उस पर जो जीन एक्टिव होने थे वो तो एक्टिव हैं, तो उसके जो क्रोमोसोम टेरिटरीज हैं वो उसके अकॉर्डिंगली अरेंज्ड होंगी। लेकिन कैंसर सेल में तो बहुत सारे और जीन्स एक्टिव हो जाते हैं ना, जो कि नॉर्मल में नहीं थे, तो ऑटोमेटिकली उसका जो क्रोमोसोम जो टेरिटरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस तो चलो शायद रोल प्ले कर रहा होगा, लेकिन जीन एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें रोल प्ले करती है, ठीक है। अभी हम यही बात पढ़ते आ रहे हैं पीछे भी कि जो जीन एक्टिविटी है, जो ट्रांसक्रिप्शन है, उसकी वजह से ही वो या न्यूक्लियस के इंटीरियर में वो रीजन चला जाएगा जहाँ पे वो एक्टिवली ट्रांसक्राइब हो रहा है, ठीक है। और अगर वो इनएक्टिव है तो वो उसकी पेरिफेरी वाली साइड पे रह जाएगा। फिर हम ये भी पढ़ रहे हैं कि जो प्रोटीन्स जो कि इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर बना रही है न्यूक्लियस के अंदर, वो जो हैं अगर उनको म्यूटेट कर दें तो तब भी इसका आर्किटेक्चर डिस्टर्ब होता है। तो इसका मतलब है कि वो प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी डोमेन्स के जरिए से ही इंटरेक्शन कर रही हैं जीनोम के साथ, और वो उनका अपना स्ट्रक्चर, उनका अपना जो है कंजर्व होना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी स्ट्रेसर्स हो गए या जी सेल डिवीजन्स, क्या ये इसके स्ट्रक्चर को टेरिटरीज के अफेक्ट करते हैं? जी। अच्छा, एक तो पॉइंट ये है कि सेल डिवीजन तक तो हमने इसलिए नहीं जाना कि हम जब ये बात करते हैं ना जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जीनोम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये सेल डिवीजन से पहले इंटरफेस स्टेज पे है, ठीक हो गया। तो इस वजह से वो तो हम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो सेल टाइप स्पेसिफिसिटी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फिब्रोब्लास्ट सेल डिवाइड होगा तो जो उसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी उसमें जीनोम ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह ही होगी जो कि उसके पेरेंट सेल में थी, ठीक है। तो सेल टाइप स्पेसिफिसिटी तो उसको इम्पैक्ट नहीं करेगी। जो एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट ऑब्वियसली कर सकती है कि अगर आप खुद सोचते कि एनवायरनमेंट में कोई ऐसी कोई ग्रोथ हार्मोन है फॉर एग्जांपल, वो आ गया, या किसी न्यूट्रिएंट की हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर और इस तरह की कोई चीज़ हो गई है, तो फिर पर्टिकुलर जीन्स जब एक्सप्रेस होंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्रोमोसोम इसकी जो टेरिटरी है उसको अफेक्ट करेंगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एंड अच्छा, मैम, अब एक और चीज़ जी बोले। मैम, इसके जो जीनोमिक काज है, यानी कि हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, वो जी अपने जी आप को अरेंज करते हैं, बट जीनोमिक लेवल के ऊपर वो जीन्स, वो रीजन्स जो कि स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं, क्या वो डिस्कवर हुए एनीथिंग अबाउट देम? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम मतलब डीएनए के सीक्वेंस में ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो कर सकते हैं? असल में ह्यूमन जीनोम तो पूरा चूंकि नहीं सीक्वेंस। नहीं, जी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपने आप को एक स्पेसिफिक तरह अरेंज कर रहा है हर डिफरेंट सेल लाइंस के अंदर, तो ठीक है। जीनोमिक लेवल के ऊपर देयर वुड हैव बीन सम जीन्स जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते होंगे। तो वो अभी तो स्ट्रक्चर के बारे में यस वी आर स्टडिंग, बट क्या वो जीनोमिक रीजन्स भी पता है हमें जो कि इस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं? अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि अभी तक जो जीनोम के जो रीजन्स जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहे हैं, कुछ तो आइडेंटिफाई हुए, जैसे कि जो न्यूक्लियोलस है ना, उसके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स होते हैं, ठीक है। वो जीनोम में रीजन्स हैं ऐसे, वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड हैं, और वो रीजन्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं, वहाँ उन पे प्रोटीन जब बाइंड करती हैं तो वो न्यूक्लियोलस को अपना एक पर्टिकुलर रीजन या सब कंपार्टमेंट जो बना सकते हैं उसको ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसमें ये हो सकता है, लेकिन सब के सब अभी तक लिंक नहीं किए जा सके, और उसकी एक रीज़न ये भी है कि वैसे आप देखें तो हमारा जो जीनोम है वो तो नॉन कोडिंग, मेजॉरिटी तो नॉन कोडिंग है ना, ठीक है। और नॉन कोडिंग होने की वजह से अभी तक
किसी पर्टिकुलर रीजन को हम ये पिन पॉइंट शायद नहीं कर पाए कि अगर हम इसको म्यूटेट कर दें तो क्या ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अभी हम अंदर यही पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट ना, कि जब ये जूम इन अप्रोच के जरिए से हम देख सकते हैं कि हम इंडिविजुअल जीन को या उस रीजन को म्यूटेट करें, फिर हम उसका जो है वो चेक करें कि ये इसकी कोई इफेक्ट हुआ है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं हुआ, ठीक है। ये म्यूटेशन स्टडीज के जरिए से ये चीज़ मालूम की जा सकती है, लेकिन बहुत डिटेल्स पता नहीं है इसकी अभी ना। कुछ रीजन आइडेंटिफाई हुए हुए हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, डिटेल्स नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। मैम ओके सो जी बोलें। मैम जो क्रोमोसोमल टेरिटरीज हैं उनके बारे में हमने कहा कि ये नॉन रैंडम है, लेकिन डिफरेंट सेल टाइप्स में डिफर करते हैं। सॉरी क्या नॉन रैंडम है, तो दूसरा पॉइंट क्या आपका? और दूसरा ये था कि डिफरेंट जो सेल टाइप्स हैं उनमें ये डिफरेंट है पोजीशन जी की। हाँ यही बात है मैम। जी जी ऐसे ही है, हाँ जी। ओके, वैसे कंफर्म। अच्छा so what is the situation, how different chromosome territories they are interacting with each other, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने। The discovery of non-random radial positioning of CT suggested the intriguing possibility that there might be non-random interaction patterns among the population of CT. Initial studies using multifluorescence in situ hybridization FISH techniques were consistent with this view and indicated non-random, albeit probabilistic interchromosomal associations. So, alteration in these associations in different cells and tissue types during cell differentiation and in cancer further supported a relationship to genomic function. अच्छा, एक हम बात कर रहे थे कि within the chromosome territory क्या situation है, ठीक है। और अब हम बात करें कि एक टेरिटरी दूसरी टेरिटरी के साथ जब इंटरेक्शन करती है तो इज दैट इंटरेक्शन रैंडम और नॉन रैंडम, ठीक है। रैंडम मीन्स कि नहीं जी ये कोई एसोसिएशन नहीं है, नॉन रैंडम मीन्स नहीं इसकी एसोसिएशन है, वो बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंटरेक्शन करते हैं। सो दे एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दे कंक्लूडेड इट दैट दे एक्चुअली हैव a non-random relationship. They have a very specific relationship, you can say. Okay? So one limitation of most of these studies is that they evaluated interchromosomal associations based on the distances between the centers of gravity of the chromosome territory. So thus specific interactions at the borders or interfaces between neighboring CT are not captured. अब इसमें वही बात मैंने पीछे जो बताया आपको कि आपने जब भी लोकेशन चेक करनी है ना न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट रीजन्स की, तो आपको रेफरेंस पॉइंट देखना है। अब सेंट्रल रीजन अगर आप विद इन द कोर ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, उसको देखें या फिर पेरिफेरी से देखें चलते हुए जाएं, तो फिर वो जो डिफरेंट यूज करते हैं ना टेक्निक्स वगैरह, तो उससे फिर इनको पता चलता है कि ये क्या सिचुएशन है। तो इस चीज को कैप्चर करना जो है ना वो आसान नहीं है, इट्स क्वाइट daunting task. So studies measuring CT interaction based on distances between their nearest border sites revealed that corresponding distances based on CT centers are highly variable and often do not correspond to the positive associations measured by nearest border to border interaction. यानी periphery के पास close में कौन सी territory थी, उस territory के further next close में कौन सी territory थी, and so on. So furthermore, due to technical limitations of FISH labeling and analysis, most of these studies analyzed up to only 3 chromosome pairs per nucleus. यानी अब आपके पास अगर क्रोमोसोम पेयर्स जो हैं, आप सारे के सारे क्रोमोसोम पेयर्स पर एक ही वक्त में एक्सपेरिमेंट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है कि हमारे पास इतने कलर वेरिएशंस एग्जिस्ट नहीं करते जो कि फिश के प्रोब्स में हम यूज करते हैं। So to circumvent these difficulties, a 3D re-fish approach was adopted to simultaneously analyze large subsets of CTs in individual nuclei. अब फिगर 3 में इन्होंने बहुत शो किया हुआ है कि depicts typical CT multicolor labeled images from re-fish experiments with MCF10 normal human breast cells and malignant breast cancer cells. ठीक है, उन्होंने दो टाइप के सेल्स को कंपेयर किया हुआ है, मैलिग्नेंट और कैंसर सेल्स को। फिर उसके बाद अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड ह्यूमन केराटिनोसाइट्स को सी और डी में उन्होंने दूसरी सेल टाइप को कंपेयर किया है। उसके बाद फिब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर उन्होंने किया है, ठीक है। तो उन्होंने फिर इसके बाद क्या किया कि इंटीग्रेटेड कंप्यूटर इमेजिंग प्रोग्राम को यूज़ किया और उसके बाद फिर देखा कि इंडिविजुअल सीटी, और फिर उन्होंने लार्ज बैटरी ऑफ मेजरमेंट्स की, टोटल पॉपुलेशन ऑफ लेबल्ड सीटीज, बहुत ही लंबी चौड़ी आप कह सकते हैं कैलकुलेशंस बैक एंड पे करके, तो इन्होंने जो है वो ओवरऑल चेक किया, ठीक है। और पूरा पेयर वाइज एसोसिएशन स्टडीज की, और उससे पूरा फिर उन्होंने जिसे कहते हैं ना मैपिंग कर लेते हैं स्ट्रक्चर की,
तो वो सारा इन्होंने किया। तो अगर आप इस फिगर 3 को गौर से देखते हैं और फिर आप ये देख लें, आराम से पता चल जाए, इन्होंने जो लेबलिंग किया ये क्रोमोसोम्स के नंबर लिखे हुए हैं, क्रोमोसोम 12 है, 21, 11, 1 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशंस हैं यानी डिजीज और नॉर्मल में, और फिर सेल टाइप्स हैं, कितनी वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है आपके जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी लोकेशंस में। ठीक है, आप सब लोग ये देख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। तो बेसिक जो मैसेज है वो इन सारी टेक्निक को यूज करके यही बीच में आ रहा है कि वी फाउंड लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल एंड डिजीज्ड एंड डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डायनामिक्स ऑफ इंटरक्रोमोसोमल नेटवर्क्स। अब उसमें ये बताते हैं कि द नॉन रैंडम प्रोफाइल्स ऑफ पेयर वाइज इंटरक्रोमोसोमल एसोसिएशंस व्हिच द यहाँ तक कि कर लें जी जी मैम, यहाँ तक कि कर लें काफी होगा। एक्चुअली हमने ऊपर से पूरा रीड भी करना होगा तो फिर काफी ज्यादा हो जाएगा। आप लोग को रीड तो पहले करना चाहिए था ना, मसला तो सारा ये है कि अब नहीं मैम, एक दफा आप री लोग रीडिंग मतलब आपके समझाने के बाद भी अगर असल में इसके ना 3 टॉपिक्स रह गए सिर्फ लास्ट 3D टोपोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन रेगुलेशन और जीन पोजिशनिंग एंड डायनामिक्स विद इन सीटी। मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको जो है ना आसानी हो जाएगी। मैम नेक्स्ट ठीक है क्लास मैम। में हम कर सकते हैं या अभी कर लें? मसला ये है कि नेक्स्ट में मैंने रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है, एक्चुअली ये हमारा टॉपिक खत्म होना चाहिए इधर ना। तो अच्छा इसमें पेपर में ना आप लोग इसमें उस तरह परेशान ना हो, आपने इसकी जो हेडिंग्स बनाई हैं ऑथर्स ने उनको कवर तो सबको करना है, और आपने उसके जो मेजर मैसेजेस हैं बस वही बीच में से कैरी करने हैं। ठीक है, डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारे डिस्क्राइब किए एक्सपेरिमेंट्स और ये वो, आपको उनको नहीं देखना, आपको मेन मैसेज ही कैरी करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पेपर्स को आपने इसी तरह से पढ़ना है कि आपको ये पता चल जाए ओवरऑल क्या उसमें चल रही है, अंडरस्टैंडिंग का बेहतर हो जाए आपका। ठीक है ना। तो अब ये डायनामिक्स ऑफ इंटरक्रोमोसोमल नेटवर्क क्या है कि जो इंटरक्रोमोसोमल बनते हैं नेटवर्क्स आपके, वो क्या चेंज होते हैं या नहीं चेंज होते, और उसमें क्या सिचुएशन जो है वो बनती है। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि is there an overall arrangement of the individual CT into a global interactive network that might in turn drive genomic function and regulation। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या हम अगर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं पूरे न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या जो इंडिविजुअल सीटी है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम टेरिटरी, क्रोमोसोम नंबर 1 फॉर एग्जांपल, क्या उसका कोई जो है वो रोल है कि ग्लोबल जो पूरा बन रहा है नेटवर्क उसके अंदर वो कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, उसका कोई रेगुलेशन में रोल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब उन्होंने इसको फिर मेजर लिमिटेशन इन एड्रेसिंग दिस इशू इज दैट डेमोन्स्ट्रेटेड पेयर वाइज सीटी इंटरेक्शंस व्हाइल प्रेफर्ड आर आल्सो प्रोबेबिलिस्टिक, यानी प्रोबेबिलिटीज ही फाइंड की हुई है इन्होंने पेयर वाइज इंटरेक्शन में, कि आप देखते हैं कि एक रीजन न्यूक्लियस के अंदर है, दूसरा रीजन, उन दोनों की आपस में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए इंडिविजुअल न्यूक्लियाई को लेबल करके बहुत सारी सीटीज को, तो no two overall patterns are precisely alike and may appear very different. Thus, if a preferred overall pattern of CT association exists in the nucleus, it will by nature be probabilistic and difficult to identify. So another difficulty is the enormous number of potential CT interaction in any given nucleus. With 9 sets of labeled CT, there are 153 potential pairwise interactions among the 9 homologous pairs. So there is also the problem of properly distinguish the 2 copies of each CT and their individual interchromosomal association. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि काफ़ी issues exist करते हैं अगर हम ये देखना चाहें कि जो इंडिविजुअल सीटीज हैं वो ओवरऑल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी बहुत एक्सटेंसिव किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने की है। उन्होंने काफ़ी सारे किए भी, एसोसिएशन ग्राफ्स भी बनाए हैं, मगर उसके अंदर भी ओवरऑल जो है ना वो बता दिया कि प्रॉब्लम्स काफ़ी एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं कि मे बी क्रोमोसोम पोजिशनल कोड जो है वो एग्जिस्ट करता हो, कोई बना सकें इसको। डेफिनेटली इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्टडीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेस्ड जब आप कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल प्लस फिर वेट लैब एक्सपेरिमेंट्स, इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो फिर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है। So, preferred network defined by this positional code is maintained epigenetically and facilitates specific genomic expression programs characteristic of the particular cell and its differentiation state. Probabilistic nature of the overall interactive network could in turn provide the flexibility for alterations and contribute to corresponding changes in the overall genomic program. अब अगर आप ये मेन मैसेज इसमें ये है कि अगर आपने ये देखना हो कि जो इंटरक्रोमोसोमल नेटवर्क्स बनते हैं उनमें हम कोई ऐसा बना सकते हैं कोड टाइप, फॉर एग्जांपल जैसे ने एग्जांपल दिया कि MCF10 सेल लाइंस जो हैं या नॉर्मल सेल लाइंस हैं या ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइंस हैं, तो उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी की बेस पे कोई पैटर्न डेवलप कर लें कि कैंसर्स हैं तो इनका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की होगी और उसमें जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम टेरिटरी है उसका क्या, या CT जो है उसका क्या रोल है। तो अभी तक ये रिसर्च है वो कंटिन्यू ही है और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अभी फ्लेक्सिबिलिटी जो वो एग्जिस्ट करती है, प्लस ये कि जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है और इंडिविजुअल सेल की बेसिस पे आप 100% जो है ना उससे नहीं कह सकते, क्योंकि फिजियोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। फिर उन्होंने बताया इंटरक्रोमोसोमल इंटरेक्शंस एंड ट्रांसलोकेशंस। इसमें उन्होंने मेन ये बताया कि जो कैंसर सेल्स हैं उसमें आपको पता है कि लार्ज लेवल पर ट्रांसलोकेशंस होती हैं ना, रीजन्स जो है वो रीअरेंज करते हैं जिनोम में, और more than 600 recurrent balanced chromosomal rearrangements have been documented in human cancers. अब इतनी सारी जब rearrangements रिपोर्ट हुई हुई हैं, and this directly shows कि जो interchromosomal interactions हैं और translocation जो है वो रोल प्ले करते हैं ट्यूबरोजेनेसिस के अंदर, ठीक है ना। तो अब ये इन्होंने जो भी स्टडीज की सेल टाइप्स लिए उनको चेक किया तो उनको ये फाइंडिंग्स जो थी वो मिली उसके अंदर ना। फिर टिश्यू स्पेसिफिसिटी जो है इंटरक्रोमोसोमल इंटरेक्शन में और ट्रांसलोकेशन में वो भी रिपोर्ट हुई हुई है। इसका मतलब है कि खास टिश्यू में ही इंटरक्रोमोसोमल इंटरेक्शंस और ट्रांसलोकेशन जो है वो अपने खास स्टाइल की होती हैं, और जो टिश्यू टाइप चेंज होगी तो वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कि these findings that translocations are more prevalent between sites of higher interaction frequency were confirmed by a high C approach. अब ये कि जहाँ पे individual CTs की आपस में interaction हो रही है वहाँ पे जब translocations हो जाती है ना तो वो important है, वो पे disease cause कर सकते हैं। As anchor sites on chromatin loops are fragile sites for double strand break. Double strand break are enriched at TAD boundaries. So overall these studies implicate cell and tissue type specific interchromosomal interactions and higher order chromatin organization as the epigenetic basis for generation of characteristic chromosome translocation during cancer progression. चलिए मैं स्टॉप करती हूँ इधर। लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, आप लोग कोशिश करें कि उनको भी पढ़ लें और फिर हम देख लेंगे कोई इसमें क्वेश्चन हुआ तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स भेज दिए हैं। ऑलमोस्ट 5 लोगों के हैं ग्रुप्स, ठीक है। और उसमें जो आपका है ना ऑर्डर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर्स का उसके अकॉर्डिंगली ही किया हुआ है, ठीक है। तो 1st to 5 जो पहला ग्रुप है, फिर 6 से नेक्स्ट वाला जो है वो सेकंड ग्रुप है, एंड सो ऑन। तो टॉपिक उसमें लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इसको जो है ना इसकी प्रेपरेशन कोशिश करें कि शुरू कर दें, क्योंकि मिड टर्म के बाद आप लोग की प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएंगी बीच में। तो वो मेरे लेक्चर और आप लोग की प्रेजेंटेशन साइड बाय साइड चलेंगी। तो हम मतलब चूँकि टोटल 12 प्रेजेंटेशंस होगी तो हम चाहेंगे कि इसके अंदर हम टाइमली इसको कवर भी कर लें और ख़त्म भी कर लें साथ साथ, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दी हुई आपको, जो मैंने फाइल शेयर की है एहतशाम से। एहतशाम आप शेयर कर लेना सारों से, ठीक है। जी मैडम, मैंने ग्रुप में भेज दिया है। 20th को इंशाल्लाह।
किस चीज पे? नहीं, फिजिकल का तो मुझे कोई नहीं लग रहा अभी तक, हमें कोई, हम वेट ही कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, कि जैसे ही पता लगेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे। अगर फिजिकल नहीं होगा, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर हम जो है ना उसको ऑनलाइन ही करेंगे। हम टीम्स पे होगा? जी टीम्स पे होगा। ठीक है मैम जी, बोलें। मैम आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर की बेसिस पे हैं या आपके पास जो लिस्ट है उसकी बेस पे? नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर की बेसिस पे। मैम असल में डिपार्टमेंट्स अलग हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर के जो रोल नंबर हैं वो ओवरलैप भी कर रहे हैं। नहीं, वो ना बता देंगे आपको एहतशाम, ठीक है। ओके मैम। हाँ, वो जो और टॉपिक्स तो शेयर रजिस्ट्रेशन कर लेना। नंबर तो जो होता है ना क्लास में वो शेयर हो जाएगा। हाँ, एहतशाम आप जो है ना वो मैंने आपको लिस्ट भेजी हुई है कि नहीं? मैडम लिस्ट नहीं भेजी, लेकिन मैं भी लैब ही हूँ, क्लास के बाद आ जाऊँगा। नहीं, मैं आपको भेज देती हूँ ना, मैंने वो क्विज के मार्क्स भेजे तो वो उस लिस्ट के मुताबिक ही आपको भेज देती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सही है, ठीक है। ठीक है, चलें, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल होती है क्लास। अल्लाह हाफिज। आप हाफिज मैम। हाफिज़ मैम।